Hello everyone, my name is Kiran Chaudhary and I am your biology faculty at Infinity Learn YouTube channel by Sri Chaitanya. Welcome in my class students. Hello everyone, I will definitely take that comment into consideration, do not worry, but you try to stick to the end, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और टॉपिक की बात कर लेते हैं. कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक. चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. एंड व्हाट इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in this session? The topic is search for the genetic material. Yes, students, as you can see, we'll talk about search of the genetic material. That means definitely we will try to peep into the history and find out and see who are the various scientists whose work was taken into consideration or who did a remarkable work in that journey where scientists were trying to find out what exactly is the genetic material. Is it DNA? Is it RNA or is it protein? So before this conclusion, obviously students, right now in this present time we all are clear. Hello Sunil. So we all are clear from this very fact that DNA is the genetic material, but this is what we know today after the work and contribution by several scientists, right? But let us see how scientists came to this conclusion of today that DNA is the genetic material. So we will see, or our discussion will revolve around three different chemical nature particles, that is it DNA, is it RNA or is it protein? Which one is the genetic material? Because around these different types of chemicals only the whole or entire discussion of the scientist was revolving. Their work was revolving in order to find out what exactly is the genetic material. So let us start the session, and obviously before starting the session I would love to give you a very important information that you all should visit to our website, that is infinitylearn.com, and do check out the amazing courses that we offer there, right? And you can use the code Kiran40 to utilize those courses at 40% off. Also one important information students, we have recently launched our batch targeting NEET 2022, where we will be discussing, or we will be teaching the entire syllabus of 11th and 12th class, right? The target is NEET 2022 batch, right? And for the date, if I can say, we will be considering admission till 25th of November. So that means you need to hurry up for the admission, and not to forget what you can do, you can apply the code Kiran40 to, you can apply the code Kiran40 to register yourself to take the subscription of this course NEET 2022 at 40% off by using this code. I hope the information is very much clear to all of you. Now let us start. Okay. So see students, काम तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया, राइट? कि DNA, आज हम लोग जैसे जानते हैं कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, इस कंक्लूजन तक आने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया, बट कुछ लिमिटेड और फ्यू नंबर ऑफ साइंटिस्ट का जो वर्क था वो रिमार्केबल था, और विच एक्चुअली हेल्प्ड somehow directly to get to this conclusion. So उन कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम और उन कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के वर्क को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू यूटिलाइजिंग दिस एक्सपेरिमेंट एक कंक्लूजन दिया गया, क्या कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, right? So Frederick Griffith actually introduced the term transforming principle for the genetic material. So let us together साथ में मिलके सीखते हैं स्टूडेंट्स कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एग्जैक्टली उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया और वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डिस्कशन एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. So let us start the discussion. So Frederick Griffith did
Frederick Griffith did a series of experiments with this bacteria. The bacteria का नाम क्या है students? Bacteria का नाम है Streptococcus pneumoniae. So Streptococcus pneumoniae is the bacteria that is responsible for developing pneumonia. That is responsible for developing pneumonia. So Frederick Griffith actually did a series of experiments on a bacteria known as Streptococcus pneumoniae, whose general or natural tendency is to cause or develop pneumonia, right? Next, what did he observe during his experiments? He observed that this bacteria has changed its physical form. Yes, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये ऑब्जर्व किया कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ during his experiment observed that this bacteria changed from one form to another form. So there is a change in the physical form or the physical nature of bacteria. So students, chaliye let us try to see what exactly happened during these experiments that were conducted by Frederick Griffith, right? So let us see what exactly was the form from which bacteria changed its form to the another one. But to understand this whole transformation from one form to another form, we also need to understand what are the two different types of forms into which this bacteria, the Streptococcus pneumoniae bacteria exists. Only then we can understand, okay, from this form they got transformed to this during the experiment. So first we will take the introduction about the two forms of the bacteria, of this bacteria, that they exist, and then we will see that what are the experiments and during which how exactly the form, the physical form of the bacteria changed. तो चलिए देखते हैं आगे. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्म्स है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को अगर आप एक कल्चर प्लेट पे ग्रो करते हैं, व्हेन यू ग्रो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऑन अ कल्चर प्लेट, यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनीज. तो एक कॉलोनी जो बनती है वो एस स्ट्रेन यानी S and R आर द टू स्ट्रेन्स ऑफ द bacteria known as Streptococcus pneumoniae. So these are the two different types of strains or colonies that you can see on a culture plate. One is the S strain, another is the R strain. Now let us try to find out what is the difference between these two strains. So see here students, first one, the S strain is actually smooth and shiny. So the colonies that are formed from the S strain bacteria looks smooth and shiny, right? Why do they look smooth and shiny? Because this bacteria, this S strain bacteria possess mucus, or you can say polysaccharide coat over their surface, which gives them smooth and shiny appearance. Next you need to understand the presence of this mucus or polysaccharide coat actually provides virulence or virulent property to this bacteria. What is virulent or virulence property? It is the ability or potential to develop a disease. And what kind of disease can be developed from this S strain bacteria? Pneumonia, right students? So see, their colony looks smooth and shiny. Why? Because they possess a mucus or polysaccharide coat, and because of the presence of this mucus or polysaccharide coat, they possess virulent, or they are virulent. They possess the property of virulence, that is the ability to cause. Virulent means ability to cause disease. And what kind of disease they can cause? They can develop pneumonia. Now let us see what R type of bacteria look like. See here students. So R type के bacteria की जो colony होगी वो rough होगी. Why the R bacteria colonies are rough? Because they do not possess this mucus or polysaccharide coat over their surface. Hence they are rough. Because they do not possess this coat, hence they are not virulent. If they are not virulent, that means they will not be able to develop pneumonia. Right? So very important, their colony is rough, they lack mucus coat, they are non-virulent, and hence they does not develop pneumonia. Very important. Why? Because they lack this coat, right? I hope you people are very much clear between the difference of R and S. S possess the
mucus coat and they do not possess the mucus coat and hence the result, right? चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज एंड ऑन दिस सिंगल इमेज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. लिसन वेरी केयरफुली. On this single image, I am going to explain the entire experiment. वो पूरा का पूरा काम जो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान किया उसका पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन as well as we will see the conclusion. So on this single slide I will explain you both observation as well as conclusion. So it's going to be pretty amazing, but remember you need to pay attention. तो ध्यान से सुनिएगा कि एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया और उसका क्या कंक्लूजन हुआ. तो स्टार्ट करते हैं. See this, okay, there are 4 sections and I want you to observe the first one. So see what is this. This purple dots are actually what? They are the representative of live R bacteria. What is this? This is live R bacteria. अब ये जो लाइव आर बैक्टीरिया है, इस लाइव आर बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, राइट. सो ये लाइव आर बैक्टीरिया को जब इंजेक्ट किया जाता है एक माउस के अंदर तो क्या होता है. सो व्हेन लाइव आर बैक्टीरिया आर इंजेक्टेड इनटू द माउस विल नॉट डाई, माउस विल लिव. Why mouse will live and mouse won't die? Because remember, right now I have explained you the properties of R strain pneumococcus bacteria. What are these? This is that R strain bacteria are rough bacteria. Because why they are rough? Because they do not possess that mucus or polysaccharide coat. Because they do not possess this mucus or polysaccharide coat, hence they are not virulent. If they are not virulent, that means they won't be able to develop the disease. Which disease? Pneumonia, and hence the mouse will live. Next, this is what this represent live S strain bacteria. S strain bacteria of Streptococcus pneumoniae. So as you know, when this S strain bacteria is injected into the mouse, after some time mouse actually die, death. So mouse की डेथ हो जाती है, mouse actually dies. Why mouse dies? Because of the injection of live S bacteria. Why? Because remember, live S bacteria possess smooth colonies. Why? Because live, or I can say S strain bacteria possess mucus or polysaccharide coat over the surface, because of which they become virulent. What does virulent means? Because of the presence of mucus or polysaccharide coat, this S strain bacteria of Streptococcus pneumoniae has the ability or potential to develop a disease. And what is the name of the disease? The name is pneumonia. And because of the development of pneumonia into this mice after the injection of live S bacteria, the result is after some time this mouse will die because of the development of pneumonia. What is pneumonia? Pneumonia is a respiratory disease, right? So this pneumonia, this disease will actually affect the respiratory system of this mice, and hence after some time this mouse will die, right? Next, आगे देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब ये तो लाइव आर और लाइव एस जब डाला जाता है एक माउस में, तब का सिचुएशन है. नाउ लेट अस सी कि ये अगर एस बैक्टीरिया को हीट किल किया जाए तो क्या होगा. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. ग्रिफिथ वाज समहाउ एबल टू kill S bacteria through heating. So what did Griffith did? Griffith heat killed the S bacteria. That means Griffith ने S strain वाले बैक्टीरिया को किल किया, उनको हीट करके, और फिर उसी हीट किल्ड S बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस के अंदर. And what is the result? The result is mouse is living, live state. Okay. So mouse is live when in heat killed S बैक्टीरिया. तो बच्चों बहुत ध्यान देना इस बात पे, क्या कि जब लाइव आर बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है माउस में तो माउस की डेथ हो जाती. Oh, sorry, I repeat myself, that's a slip of tongue. जब लाइव आर बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है
माउस के अंदर, तो माउस की डेथ नहीं होती है, माउस जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वो निमोनिया नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पाता। वहीं जब लाइव आर बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो माउस की डेथ हो जाती है निमोनिया के होने की वजह से। वहीं अगर इसी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को किल करके वाया हीटिंग, यानी हीट किल करके एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो भी माउस की डेथ नहीं होती है। तो ध्यान देना इस इमेज और इस एक्सपेरिमेंट में, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे लाइव एस बैक्टीरिया को यूज़ किया है और यहाँ पे हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को यूज़ किया है। तो डिफरेंस किसका है? हीट किलिंग है। दोनों में ही सेम स्ट्रेन है, एस यहाँ भी है और एस यहाँ भी है, बट यहाँ पे लाइव है और यहाँ पे हीट किल्ड है। तो अगर हीट किल्ड एस बैक्टीरिया जाएगा किसके अंदर? माउस के अंदर, तो वो निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना इस बात पे। अब आओ लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट पे। लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? यहाँ पे एक मिक्सचर किसका है? मिक्सचर है लाइव आर बैक्टीरिया का, मिक्सचर ऑफ लाइव आर बैक्टीरिया प्लस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया? इन दिस एक्सपेरिमेंट लाइव आर बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, लाइव आर बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का मिक्सचर इंजेक्ट किया जाता है माउस के अंदर एंड द रिजल्ट इज डेथ ऑफ द माउस। माउस की डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, इस पे अब हमें डिस्कशन करना है। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक यही समझा कि अगर इंडिविजुअली लाइव आर बैक्टीरिया को डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है माउस में, तो माउस जिंदा रहता है, राइट। लेकिन लाइव आर बैक्टीरिया के साथ में हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को डाल दिया जाए तो माउस की डेथ हो जाती है। वहीं अगर नॉर्मली इंडिविजुअली सेपरेटली अगर आप हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को माउस में डालते हैं तो भी माउस जिंदा रहता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, राइट? सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लाइव आर बैक्टीरिया, माउस इज नॉट गोइंग टू डाई। लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, माउस विल डाई। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, माउस विल live, won't die. But live R bacteria with heat killed S bacteria, mouse will die. तो इसी पॉइंट, ये क्या है? ये चार एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। ये चारों एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की। अब आओ कंक्लूजन की बात करते हैं। तो ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट से व्हाट वी कैन कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड, और व्हाट ग्रिफिथ कंक्लूडेड, दैट what the conclusion or the observation can be, observation is clear, let us conclude now that there is transfer of, what did Griffith trying to say? There is transfer of some material from heat killed S bacteria to this live R bacteria, because of which this live R bacteria got transformed and started showing characteristics. This live R bacteria, after getting transformed, started showing characteristics like that of S bacteria, right? So the transfer of this material, which Griffith actually named it as transforming principle. तो ये जो material है, जो heat killed S bacteria से live R के bacteria के अंदर transfer हो रहा है, उस मटीरियल को ग्रिफिथ ने डीएनए आरएनए प्रोटीन नाम नहीं दिया। सिंपली व्हाट डिड ही से? इट्स अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट? सो ही सेड दैट देयर इज, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल व्हिच इज अ टाइप ऑफ अ मटीरियल और अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया टू लाइव आर बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर, this transforming principle which got transferred into this R strain bacteria enabled the R strain bacteria to develop mucus coat over their surface, because of which they now develop the virulent property, because of which now this R bacteria can cause or develop pneumonia in the bacteria, because of which this mouse will die. I repeat myself, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद में ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि कुछ तो मटीरियल है, कोई ना कोई केमिकल मटीरियल है जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से
लाइव आर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। उस मटेरियल को ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। अब ग्रिफिथ बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, इसकी वजह से किसके अंदर, लाइव आर बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से लाइव आर बैक्टीरिया के अंदर डेवलप हो रहा है क्या, डेवलप हो रहा है प्रोटीन कोड उनकी बॉडी के ऊपर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो लाइव आर बैक्टीरिया में गया, उसने इनेबल किया, उसे इतना सक्षम, उसे एबल बनाया आर बैक्टीरिया को, जिसे वो अपने ऊपर म्यूकस या फिर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बना ले, जिस वजह से अब आर बैक्टीरिया जो कि पहले नॉन वायरुलेंट था, अब वायरुलेंट हो गया और निमोनिया कॉज कर देता है माउस के अंदर। सो दैट्स द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। Hence, what did Griffith concluded? Griffith concluded that DNA is the hereditary material, right? चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया है, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सेम ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेटेड ऑन द बोर्ड, सो यू कैन रेफर टू दिस एंड यू कैन इजिली नोट इट डाउन। तो ये तो डायग्रामेटिक फॉर्म में था एंड दिस इज इन वर्ड और लाइन डायग्राम फॉर्म, बट द आंसर और द ऑब्जर्वेशन, द कंक्लूजन एक्सेट्रा आर एग्जैक्टली द सेम. So let us see the conclusion क्या था. Conclusion also I have explained you that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो हमारे ग्रिफिथ है, राइट, ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, इन्होंने जो नाम दिया उस मटेरियल को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था. उन्होंने अलग से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जैसे वर्ड्स का यूज नहीं किया. ही जस्ट यूटिलाइज द वर्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. नाउ देयर आर थ्री साइंटिस्ट नोन एज एवियरी, मैक्लॉड एंड मैकार्टी. तो ये जो तीन साइंटिस्ट है, इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिस मटेरियल का उन्होंने नाम या जिस टर्म का उन्होंने यूज़ किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उस मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या होता है. दीज थ्री साइंटिस्ट, राइट, एवियरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, दे डिड एक्सपेरिमेंट to understand the biochemical nature of the transforming principle which is responsible for transforming live R bacteria into the one which is showing the properties of S strain bacteria and causing pneumonia in the mouse, right. तो चलो देखते हैं कि इन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया. पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज बिफोर द वर्क ऑफ एवियरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, प्रोटीन वॉज कंसिडर्ड एज द जेनेटिक मटीरियल. तो इनके काम करने से पहले, इनके इन एक्सपेरिमेंट से पहले ये जनरल आइडिया या नोशन था जो फ्लोट कर रहा था अमंग द साइंटिस्ट कम्युनिटी. बट आफ्टर देयर एक्सपेरिमेंट दे शोड दैट इट इज नॉट द प्रोटीन बट इट इज द डीएनए विच इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटीरियल. तो ये तो कंक्लूजन था. पर देखते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा क्या क्या किया. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट डिड दे डू. दे प्यूरिफाइड. अब देखो बताइए, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ग्रिफिथ का, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था किसके अंदर. इट वॉज प्रेजेंट इन द आर बैक्टीरिया, राइट. इट वॉज प्रेजेंट इन द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, राइट. सो द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसकी हम लोगों ने इतनी देर तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में वो किसकी बॉडी का पार्ट है जो कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ. द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज अ पार्ट ऑफ R strain bacteria and then it got transferred from this S strain bacteria to R strain bacteria. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, they purified proteins, DNA, RNA, etc. from heat killed S cell to see which one could transform the live cells, right? तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो S strain था, S strain के केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया, आरएनए को अलग किया, प्रोटीन को अलग किया, डीएनए को अलग किया, और ये देखने की कोशिश की गई कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में एग्जैक्टली कौन सा केमिकल है जो कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम आर टू एस. चलिए देखते हैं हम लोग. सी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड डू दे. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करते हैं. आई होप दिस मच इज visible to all of you. So see, what is this? This is a test tube. In this there's a culture medium of R bacteria.
तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, तो इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कल्चर को फिल कर दिया, राइट। अब इसके साथ साथ इन्होंने उस कल्चर में क्या डाला, एस टाइप का RNA, right? So in this test tube there is a culture of R bacteria, and in that they have mixed RNA of S type bacteria, and after some time they do not observe any चेंज, यानी कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का कल्चर था, कुछ समय बाद भी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आर बैक्टीरिया ही थे, किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ आर बैक्टीरिया का इनटू एस। हेंस इट शोज दैट आरएनए इज नॉट द मटीरियल, और आरएनए इज एक्चुअली नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग principle that Griffith used in his experiment. So there is no change. No change का क्या मतलब है बच्चों? No change means RNA of S type is actually not acting as a genetic material. Next in this test tube you can see there's a culture medium of R strain bacteria. There's a culture medium of R strain bacteria, और इसके अंदर क्या मिक्स किया गया, S टाइप का प्रोटीन, यहाँ पे क्या था, S टाइप का RNA, and in this experiment, in this culture medium of R strain there is a mixture. What is mixed? Proteins from S strain bacteria, and after some time again no change was observed, there was no transformation of R bacteria into S bacteria, again no change. So hence it proves that proteins are not acting as the transforming principle in the Griffith experiment. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप देखिएगा इस कल्चर मीडियम में, इन दिस टेस्ट ट्यूब देयर इज अ कल्चर मीडियम ऑफ व्हाट, देयर इज अ कल्चर मीडियम ऑफ आर बैक्टीरिया, एंड इन दैट दे हैव मिक्स्ड डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन एज वेल एज डीएनएस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चीजें हैं, टू थिंग्स, इन दिस कल्चर मीडियम ऑफ आर बैक्टीरिया डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन एज वेल एज डीएनएस आर ऑल्सो एडेड। तो ध्यान दीजिएगा डीएनएस एक्चुअली में एंजाइम होता है, डीएनएस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डीएनएस एक्चुअली में एंजाइम होता है, एंड दिस डीएनएस एंजाइम कैन एक्चुअली डू व्हाट, इट कैन डू डाइजेशन ऑफ द डीएनए। तो डीएनएस के साथ में डीएनए एस टाइप के डीएनए के साथ अगर आप डीएनएस भी डालोगे तो क्या होगा, तो भी कोई भी चेंज, नो चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड, नो चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट, यानी कि नन ऑफ द आर बैक्टीरिया गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू S1। नेक्स्ट देखिएगा, इन दिस मीडियम only in the culture medium of the R bacteria, in the culture medium of the R bacteria only DNA of S type was mixed. तो इन दोनों को compare करो, compare both these. What is the difference? Here there is a culture medium of R strain bacteria, here also culture medium of R strain bacteria. But यहाँ पर R strain bacteria के culture medium के साथ साथ में DNA ऑफ एस टाइप के साथ साथ में डीएनएस भी है, यानी एस बैक्टीरिया का डीएनए भी है और डीएनएस एंजाइम भी है, और यहाँ पर एस बैक्टीरिया का सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट है। सो दैट्स द डिफरेंस। और कुछ समय के बाद ऑब्जर्व करने पे ये पता चला कि सम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस, यानी कुछ आर बैक्टीरिया की सेल्स एस बैक्टीरिया वाली प्रॉपर्टीज को शो कर रही थी। सो ओनली चेंज वॉज ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन 3 एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज शो नहीं हुआ। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें नहीं हुआ, दैट मीन्स इन द फर्स्ट केस इज what is the conclusion that you can draw? These are the observations. What I have discussed till now are the observations. Now let us try to conclude. तो conclusion क्या है? Conclusion ये है कि अगर RNA डालने पर S type बैक्टीरिया का RNA डालने पे कोई change नहीं, that means RNA is not responsible for, RNA is actually not the transforming principle. RNA is not acting as a genetic material. Next, protein डालने पर S type बैक्टीरिया की प्रोटीन डालने पर भी कोई चेंज नहीं आना, इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट एक्टिंग एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में देखो, अगर डीएनए को सेपरेटली डाला जाता है कल्चर मीडियम में आर बैक्टीरिया के, सो देयर इज अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी सीन। बट अगर डीएनए के साथ आप डीएनएस को डाल रहे हो, there is no change, no transformation is seen. That means here is the clear indication, the conclusion can be clearly drawn that DNA is acting as the genetic material. So the transforming principle term that was utilized by Frederick
Griffith in his experiment was actually referring to DNA and not to RNA and protein, because when DNase was introduced into the medium, DNase activity was affecting the transformation. I repeat myself, when DNase was added into the medium, activity of DNase was affecting the transformation, but when DNase was not present, the transformation could easily take place in the presence of DNA of S strain. Now this gives a clear indication that DNA act as a transforming principle or genetic material. But remember students, again, although they gave a clear indication, and from this experiment it was clear that DNA is the genetic material, but still scientists of that time were not convinced, were not happy, or were not satisfied with this experiment or the conclusions of this experiment, and hence come the another experiment of Hershey and Chase. तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. तो ऑब्जर्वेशन क्या था? DNA alone from S bacteria transformed R bacteria. Why? Because digestion with DNase did inhibit the transformation, or proteases and RNase did not affect the transformation. तो यहाँ पे proteases डाल के, यहाँ पे RNase डाल के भी कोई change नहीं नज़र आया. That means protein and RNA is not the genetic material. This experiment itself, this line itself, this fact, this observation itself is enough to say that protein and RNA are not acting as the transforming principle or genetic material, right? Next. So the conclusion is what? The conclusion is DNA is the hereditary material, but again most of the scientists were not convinced. So here comes the next one, but before that let us discuss the difference between DNase and DNA. So ये जो question है, it is given in your NCERT students. So listen, there's no big see, बहुत ध्यान से सुनना, ये DNase क्या है? Means multiple copies. What is DNase? Multiple copies of DNA. That means multiple molecules are present. And what is DNase? When ASE term is used in the suffix, remember this. This means it is an enzyme. This means DNase is an enzyme which can digest DNA. So ये डिफरेंस होता है DNase के अंदर और DNase के अंदर, digest DNA molecules. So I hope no one will be ever confused in all this, right? So DNase क्या है? Enzyme, और DNase क्या है? Multiple copies. चलिए लास्ट आज का हम लोगों का जो डिस्कशन है वो कर लेते हैं अब हमारा. अब देखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिंस साइंटिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड बाय the work of Avery, MacLeod and McCarty, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमें डिस्कस करना है वो है मार्था और चेस का. देखिएगा, हर्शे एंड चेस का. मार्था चेस इज द नेम ऑफ वन साइंटिस्ट. तो अब हम लोगों को नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो समझना है वो किसका है? हर्शे एंड चेस का. एंड दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली गिव्स द unequivocal proof that DNA is the genetic material. अब वो जो डिस्कशन था ना, याद करो एवेरी, मैक्लियोड और मकार्टी से पहले जो डिस्कशन चल रहा था कि नहीं प्रोटीन होता है जेनेटिक मटीरियल. सो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट scientists had the clear idea, clear notion that it is not the protein but DNA which is acting as the genetic material. So let us see how and what is the experiment, what is the observation and finally इनका क्या conclusion था. तो ध्यान देना यहाँ पे अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं. इन्होंने हर्शे एंड चेज ने क्या यूज़ किया? हर्शे एंड चेज ने एक तो बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल किया. व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? दीज आर द वायरसेस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया. एंड सेकेंडली उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? ई कोलाई बैक्टीरिया का. सो बैक्टीरियोफेजेस दैट पोजेस डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल एंड प्रोटीन कोट, ऐसे बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ किया जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं. और कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में? ई कोलाई का. तो देखिएगा इन्होंने क्या किया. सी व्हाट डिड दे डू? They actually grew bacteriophages for several generations on radioactive phosphorus and sulfur. ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, radioactive phosphorus और radioactive sulfur पर कई जनरेशन तक
बैक्टीरियोफेजेस को ग्रू करवाया गया। तो उससे फाइनली क्या हुआ, फाइनली आपको कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेजेस मिले जिनके अंदर ये दोनों अलग अलग करवाया गया। कुछ बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में और कुछ बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव सल्फर के ऊपर ग्रू करवाया गया। तो फाइनली आपके जो बैक्टीरियोफेजेस मिले जिनसे आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना था, वो बैक्टीरियोफेजेस कैसे थे? सो सम बैक्टीरियोफेजेस हैड व्हाट, तो ये वाले जो बैक्टीरियोफेजेस जिन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कोड था, यानी कुछ ये जो बैक्टीरियोफेज है इनके पास में क्या है, इनके पास में रेडियो एक्टिव कोट है, कैप्सूल कह दो या इसे कोट भी कह सकते हो। तो रेडियो एक्टिव कोट है, ठीक है, और इनके पास पे नॉर्मल डीएनए है, डीएनए इनका बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। और ये वाले जो बैक्टीरिया इनके पास क्या है, रेडियो एक्टिव पी, यानी इनका डीएनए इज रेडियो एक्टिव, डीएनए इज रेडियो एक्टिव, और इनका जो कोट है, कोट इज नॉर्मल। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, दो टाइप के बैक्टीरियोफेजेस है। ये वो बैक्टीरियोफेजेस है जिनको कई जनरेशन तक रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो करा गया। और आपको पता है सल्फर एलिमेंट प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड में होता है, सल्फर जो है वो डीएनए में नहीं होता। तो ये जिस मीडियम में, जिस रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच दिस सल्फर गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोटीन कोट ऑफ द viruses. Hence these viruses, these bacteriophages will possess radioactive protein but normal DNA, because DNA के अंदर तो सल्फर होता ही नहीं है। और इन बैक्टीरियोफेजेस को कई जनरेशन तक ग्रू करा गया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, और फॉस्फोरस इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, हेंस फॉस्फोरस विल नेवर बिकम पार्ट ऑफ द प्रोटीन कोट in any generation of the bacteriophages, but phosphorus is a component of DNA, right? तो ये जो bacteriophages है वो है जिनके DNA के अंदर radioactive phosphorus है, hence their DNA is radioactive, but phosphorus is not going to be present in amino acid, hence they will have normal protein coat. तो DNA radioactive, coat is normal, coat is radioactive coat but DNA is normal. तो ध्यान रखना। अब क्या हुआ, now these bacteriophages were allowed to attack or infect the E. coli cell. तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी E. coli की सेल। तो जब बैक्टीरियोफेजेस ने, ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, इसके बीच में लाइन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट को साथ में इमेजिन करना है, यू हैव टू इमेजिन बोथ दीज एक्सपेरिमेंट्स टुगेदर। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो व्हेन बैक्टीरियोफेजेस विल इन्फेक्ट the bacteria, what will happen? First of all, the bacteria will try to attach on the surface of the bacteriophages will try to attach on the surface of the bacteria, and slowly they will transfer, bacteriophages will transfer their genetic material, they will transfer their genetic material into the E. coli bacteria, right? दोनों तरफ यही होगा। Then what will happen? See, the bacterial cell will actually consider the DNA of bacteriophages as their own DNA and will start making multiple copies of the virus DNA, right? तो ये क्या होगा, इस तरीके से जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है किसका, बैक्टीरियोफेजेस का ऑन E. coli, there will be production of multiple copies of viral DNA inside the E. coli. फिर क्या होगा, next, this is infection, next stage is blending. So what will happen in this stage of blending, the protein coat will be detached from the surface of the E. coli bacteria. So with the help of agitating the bacteria into a blender, यानी blending करके बैक्टीरिया का के जो सरफेस है उसके ऊपर से, बैक्टीरिया के ऊपर से वायरस के प्रोटीन कोड्स को डिटैच करवाया जाएगा। Next, in the next stage, what will happen? Centrifugation. So with the help of centrifugation techniques, the viral particle and the bacterial particles will get separated out. And as a result, afterwards, जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद में जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं वो क्या है? The observation is, so in this experiment, after centrifugation, what was observed? That no radioactive S35 डिटेक्टेड इन द सेल, यानी बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर, कौन सी सेल्स है ये, बैक्टीरियल सेल्स है। तो ध्यान दीजिएगा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इट वाज सीन दैट
रेडियो एक्टिविटी वॉज नॉट, यानी ऑब्वियसली आप रेडियो एक्टिविटी वाया सर्टन टेक्निक आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ट्रेस करने की कोशिश करोगे, राइट. सो आफ्टर ट्राइंग टू ट्रेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर यूटिलाइजिंग सर्टन टेक्निक, तो ये ऑब्जर्वेशन आया कि बैक्टीरियल सेल्स, दीज ई कोलाई बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट पोजेस एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दे आर नॉट पोजेसिंग रेडियो एक्टिव सल्फर. यही तो यूज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, रेडियो एक्टिव सल्फर S35. सो द एक्सपेरिमेंट, द ऑब्जर्वेशन सेज दैट नन ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स पोजेस radioactive sulfur, but the supernatant मतलब वो जो ऊपर तैर रहा होगा ना, in that experiment, in that test tube, something that is floating on the top. So the supernatant actually possessed what? Supernatant possessed the radioactive S35, and this supernatant is actually formed of what? It is formed of the protein coats of the virus. तो जो supernatant जो कि बना हुआ था प्रोटीन या बना हुआ था वायरस के प्रोटीन कोट से, दैट सुपरनेटेंट एक्चुअली पोजेस द रेडियो एक्टिव सल्फर. तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है? सो द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट सल्फर डिड नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो रेडियो एक्टिव सल्फर जो कि प्रोटीन कोट में था किसके? वायरस के, वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं. किसमें? ई कोलाई के बैक्टीरिया में. हेंस इट इज अ कंक्लूजन दैट प्रोटीन इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया. फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया ये जा ही नहीं रहा है. हेंस दिस कैन बी कंक्लूडेड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था ग्रिफिथ में, उसमें प्रोटीन was not the transforming principle. So I'm trying to make a link between these two experiments. फिर ये ऑब्जर्वेशन देखो, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी कि P32 was detected in the cells. कौन सी सेल्स? ई कोलाई की सेल्स. सो ई कोलाई की जो सेल्स थी, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि ई कोलाई सेल्स एक्चुअली शोड द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, राइट. एंड इन द सुपरनेटेंट no radioactive activity was observed. Supernatant is formed via the protein coat of the virus. तो ये जो supernatant जो कि वायरस की प्रोटीन कोट से बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं है, लेकिन ये जो ई कोलाई है इनकी सेल्स में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है. व्हाट डज दैट मीन्स? दैट सिंपली मीन्स दैट वायरस बैक्टीरियोफेजेस के जो डीएनए के अंदर आपका फॉस्फोरस था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, और आपको अभी एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन करने पर ये पता चला कि इनसाइड द ई कोलाइट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दिस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. Hence it was concluded that it is the DNA material that is getting transferred from bacteriophages to E. coli, and hence the conclusion is that it is the DNA and not the protein that is getting transferred from bacteriophages viruses to the bacterial cells of E. coli. So इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये जो एक्सपेरिमेंट था हर्शे और चेस का, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बिना किसी ऑब्जेक्शन के क्लियर हो गया कि it is not the protein but DNA that is acting as a genetic material. I hope students आपको आज तक का ये लेक्चर जो भी मैंने समझाया ये समझ में आया हो. Let me know if there is any doubt. Otherwise, I would love to conclude the session. As far as I can see, there are no doubt. That means you people were able to follow it perfectly. Okay, students, thank you for joining this session. Thank you for coming. Thank you for participating in my class. If you like me and this session, please give me a thumbs up and do not forget to subscribe Infinity Learn, and also hit the bell icon so that whenever I will be live, you will also be notified and won't miss any session in the future. Thank you, students. That's all from today's session.